The view is mesmerizing. Honestly speaking, this is the best falls I've ever seen in Meghalaya. ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खा जाता है. इट्स अ कार्निवोरस प्लांट. हेलो एंड वेलकम टू द मेघालय सीरीज पार्ट 6. हम लोग मेघालय के जैंतिया हिल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. लास्ट व्लॉग में आपने हमें दावकी में देखा. अब हमारा प्लान है जोवई जाने का. रास्ते में हम 2 वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करेंगे, क्रैंग शुरी एंड फी फी वाटरफॉल. क्रैंग शुरी फॉल्स वैसे तो दावकी से सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पे है, पर हमें यहाँ पे आने में लग गए पूरे 2.5 घंटे. एंड दैट्स बिकॉज वाज अ ह्यूज ट्रैफिक इन द वे बिकॉज ऑफ द कस्टम चेक्स एट द बांग्लादेश बॉर्डर. और हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल मेघालय के सी लेवल से भी ऊपर का था. वी आर हियर एट द क्रैंग शुरी फॉल्स. दिस इज इन जैंतिया हिल्स. मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दैट्स क्रैंग शुरी. इट्स अ 20 मिनट्स ट्रैक डाउन. फिर ऊपर जाने में करीब 45 मिनट्स लगते हैं. क्रैंग शुरी पे आज टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा ही थी, सो वी डिसाइडेड नॉट टू ट्रैक डाउन बट टू एंजॉय द क्रैंग शुरी फॉल्स फ्रॉम अ व्यू पॉइंट एंड वी केम बैक फ्रॉम देयर. तो अभी हम क्रैंग शुरी फॉल से कैंप साइट पे आए हैं. ये कैंप साइट फी फी फॉल से 20 मिनट्स की ट्रैक की दूरी पे है. यहाँ एक ऐसा कैंप साइट है जिसके पास में एक छोटी सी रिवर है और यही आज रात को हमारा घर होने वाला है. कल सुबह हम ट्रैक करेंगे टुवर्ड्स फी फी फॉल्स विच इज 20 मिनट्स अवे. जस्ट टू लेट यू नो, दिस कैंप साइट इज 20 मिनट्स अवे फ्रॉम क्रैंग शुरी फॉल्स टुवर्ड्स जोवाई. Last night was extremely cold. This morning we are going to explore Phe Phe Falls. Phe Phe Falls जाने के लिए आपको river cross करनी पड़ती है, and for that you need a boat which is always available at the campsite. After crossing the river, we start our trek to Phe Phe Falls. The entire stretch of the trek looks like igneous rocks, जैसे यहाँ पे कभी कोई volcanic eruption हुआ था. But later we identified यहाँ पे coal mining होती थी. Don't know legal or illegal. So there's a thing about Phe Phe Waterfalls is it's a 2-tier waterfall. आप पहले फॉल पे तो अभी पहुँच गए हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है. उसके लिए थोड़ा सा आपको दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ता है, दूसरे ट्रेल पे जाना पड़ता है. बट इट्स नॉट मच, इट्स ओनली 2 मिनट्स टू गेट अ व्यू ऑफ दैट फॉल एंड देन विल गो ऑन अ डिफरेंट ट्रेल टू फॉलो फे फे वाटरफॉल.
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है फे फे फॉल टियर 1। यहाँ आने के लिए हमें कैंप साइट से अबाउट 20 मिनट्स लगे and there is another 20-30 minutes trek down for the tier 2 of Phe Phe Fall. हमने देखा टियर 1 ऑफ फी फी फॉल्स और फे फे फॉल्स, और ये इसका एक टॉप व्यू था। राइट नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर ट्रेल विच टेक्स अस डाउन टू द टियर 2 ऑफ दिस फी फी और फे फे वाटरफॉल, और वहाँ से हमें इस वाटरफॉल का बॉटम व्यू मिलेगा। सो इट्स लाइक बीनीथ द वाटरफॉल एंड विल ट्रैक डाउन देयर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। To make it easier for the tourist, locals ने यहाँ पे फ्लैग्स लगा रखे हैं। आप बस फ्लैग्स को फॉलो कीजिए और आप फी फी के स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। So this is how the tier 2 trek down of Phe Phe Waterfalls looks like. यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, टिकट काउंटर्स बना रखा है, प्रिंट करे हुए टिकट्स 50-50 रुपए पर हेड के हिसाब से आपको यहाँ पे अलाउ करते हैं। इस फॉल्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का पानी वो है ब्लू। इट लुक्स रियली मेस्मराइजिंग। This place is so very beautiful and the vibe is magical. यहाँ से तो आने का मन ही नहीं कर रहा था. But to be mindful of the time and the daylight, we have to leave the spot. Hi guys, this is Latika. The view is mesmerizing. Honestly speaking, this is the best falls I've ever seen in Meghalaya. They are really beautiful. Now what you see next to me is a pitcher plant. ये plant ऐसा plant है जो insects को खा जाता है. It's a carnivorous plant and I was told by the locals कि ये आपको रास्ते में मिलेगा. जो हमने tier 2 के लिए ट्रैक डाउन किया था ये वहाँ पे भी बहुत सारे थे.
After covering Phe Phe Waterfall, we are heading towards Jowai, which is 20 kilometers away from here. Jowai में हम Tyrshi Waterfall देखेंगे और दुर्गा टेम्पल भी जाएंगे, which is also known as Shakti Peeth. After the camping last night and the Phe Phe Falls this morning, we are in Jowai and we are heading to Tyrshi Waterfall. हमें पता चला है यहाँ पे एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है, ज़्यादा ट्रैकिंग की ज़रूरत भी नहीं है एंड यू कैन इजीली गेट देयर. Tyrshi Waterfall is a 3-step waterfall. हर स्टेप का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है एंड द व्यूज आर अमेजिंग. कुछ ही सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं वाटरफॉल के बेस पे. ये है तायरशी वाटरफॉल और तायरिशी और तिरशी. मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ इसको सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ऊपर जो छोटा वाटरफॉल आपको लग रहा था वह यहाँ नीचे आके एक बहुत विराट रूप ले लिया है उसने. द गुड पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज यहाँ पे कोई टिकट काउंटर नहीं है, सो देयर इज़ नो एंट्री टिकट, देयर इज़ नो पार्किंग फी. कम टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं तो गाड़ियों का भी कोई इशू नहीं है. एंड देयर इज लेस पीपल, सो यू कैन डेफिनेटली कम एंड एक्सप्लोर इफ यू आर इन जोवाई. अब हम आ गए हैं माँ जयंती टेम्पल इन नार्तियांग. दिस टेम्पल इज रिकमेंडेड बाय वन ऑफ आवर फ्रेंड्स. दे सेड अगर आप जोवाई जा रहे हैं तो इस मंदिर जरूर जाएं. अ लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड शक्ति पीठ.